Hi, ma'am. I need not introduce Hello. you because you taught me in IIT Kharagpur. So, and I'm bit nervous because this is my first podcast. But nervousness का कोई वैल्यू Mine नहीं है आपके too. सामने. नर्वसनेस का कोई वैल्यू नहीं है आपके सामने क्योंकि आप सारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर लोगे बहुत इजीली एंड यू विल हेल्प मी प्रोसेस दैट Me, इन्फॉर्मेशन I'm एज also वेल. nervous because I this is also my first podcast. Yeah. Sorry, I mean you can hear my Yeah, the dog same is the bark. case. The same is the case here as well. So, I mean, Oh, yeah. so we are both newbies. No, I So don't have that's a a good dog thing. as such. I don't have a dog as such, but there is obviously some background noise as in cars moving and No, 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 no. I have a dog. okay, cool. That's nice to hear, ma'am. Yeah, what its name? मतलब उसका नाम क्या है? It's not exactly, I mean, I'm not at home right now. This is a lab, basically. You see the ID as some laser या printer. लेजर प्रिंटर It, या आप एचएसएस yeah, लैब so में हो it's अभी? that lab. Sorry? आप एचएसएस में हो अभी? नहीं एचएसएस में नहीं हूँ मैं एचएसएस में यहाँ लेजर प्रिंटर कहाँ लैब आ जाएगा मेरे मैकेनिकल और ये सब के सब अलग अलग सब दोस्त है अच्छा डिपार्टमेंट्स के मैं एक एमएनएफआई से एक लैब है वहाँ पे हूँ अच्छा अभी सही है तो सही है यहाँ वो मेरे सही है मैम. तो तो हम लोग द आज डॉग या द डॉग इज द डॉग्स नेम इज चुटकी चुटकी नाइस 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 मैम. चुटकी एंड शी इज 5 So months old is it a puppy or is it a big dog? Like 5 months old cool cool. So you brought it up? my friend got her from SN Hall like adopted it's a adopted stray. Okay, okay, okay. So, let's talk about brain, ma'am. Essentially, that is what we are here to talk about. So, ma'am, Mm-hmm. आपके हिसाब से ब्रेन है क्या असल में मतलब बिकॉज जैसे हम देखते हैं स्कल के अंदर Mm-hmm. हिडन है तो हम उसको फिजिकली नहीं देख सकते हैं बट ऑब्वियसली दिस इज अ थिंग. सो अगर Mm-hmm. एक लेमैन समझने की कोशिश करे तो ब्रेन है क्या? जब ब्रेन कहते हैं तो ब्रेन ऑब्वियसली इट रेफर्स टू द फिजिकल ऑर्गन दैट्स इट ब्रेन जैसे और भी जैसे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही एक ऑर्गन है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन व्हेन वी यूज द टर्म ब्रेन इट्स द फिजियोलॉजिकल द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर सेइंग ब्रेन इट्स वेरी क्लियर एंड वेरी डिस्टिंक्ट when we say other things when we say mind when we say psyche, when we say personality, when we say soul, that's where the problem begins. But when we talk brain, I don't think that the term brain is an issue. Okay. So So, that's ma'am, what brain like. you talked about psyche and you talked about a list of things. कुछ चीज़ें उसमें से abstract हैं, कुछ चीज़ें हम reality से उसको relate कर सकते हैं. तो Mhm. they are kind of a product of brain, right? तो कुछ internal working तो होगा brain का, because of which emotions get produced, or let's say different. Well, that is where psychology was born. Because when we talk physiology, because as I said that if I say brain is anatomical structure, so then physiology should be sufficient to describe the brain. But ऐसा नहीं था. Physiology could not describe the brain, the thinking, the reasoning, how we behave. Physiology was not sufficient to describe everything. Brain का कौन सा part कैसे काम करता है? Physiology कुछ तो describe कर रही थी. Like Galton and all, they were researching the brain. There were many researchers. Many people were like very interested in opening up the skulls of people and seeing चल क्या रहा है अंदर. Yeah, So there advent were of research. 20th century started with a lot of research in this area because a lot many people had fractured skulls, so people could see the Yeah. effects of brain damage. तो उससे भी काफ़ी आइडिया मिला था कि कौन से ब्रेन का कौन सा पार्ट किस फंक्शन के लिए यूज़ में आता है. तो Yeah. या There was this guy, I think his name was some Gall, G-A-L Gall probably, who did या so much of research regarding, like he opened up cracked skulls and saw the brain. So there was so that was physiology. But then there was this one case of Phineas Gage. I don't know या whether you've heard I've about it. heard I about think him. I've mentioned in class Yeah as well. I yeah always do yeah that. yeah Yeah. So then physiology was not sufficient. Something I mean, people could find out the relationship that, okay, people's personalities are also a result of something in some structural stuff in the brain. Like there's something related to
brain and personality, brain and behavior. That is where brain and behavior got connected. The brain is not just a controlling unit of the physiology. Brain is a thinking, reasoning unit. It's something more. It's something just more than just a structure, more than just a body part. And then there was philosophy, which was describing about life, why we think, why we reason, all these things. But then philosophy, um, I mean, what's the thinking center? What's the reasoning center? It's the brain, right? Yeah, yeah, So the brain became the seat for all this philosophy. yeah, So there was always this connection between philosophy and physiology, some tussle, some love, some hate. But ultimately, this relationship gave birth to psychology yeah. because psychology was like it could explain both. It could explain the relationship between brain and behavior. That's why it was born. That's why it came into existence. मैम तो अगर हम देखें तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, Mhm. डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और सारे इंसानों में, इनफैक्ट एनिमल्स में ये पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो नहीं, सारे पार्ट्स नहीं, मतलब थ्रू आउट लेयर्स ऑफ लाइक इवोल्यूशन या ब्रेन ऐसी चीज है ना जैसे कि ब्रेन जैसे दूसरे दूसरे पार्ट्स भी डार्विन की थ्योरी अगर हम पहले तो या ये जो बातें हो रही है इन चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले इवोल्यूशन को में बिलीव करना होगा या सो पीपल हु डोंट बिलीव इन एवोल्यूशन won't understand or won't be able to like it won't make sense Yeah, so obviously. I mean, first in speaking broadly in terms yeah of mammals, reptiles में obviously some of the parts is missing. For example, prefrontal cortex उनमें missing होता है. But broadly speaking, in mammals, or let's say in humans, we have these parts. तो मैम जो humans में जो behavior में जो difference होता है और brain का structure same है, तो ऐसा behavior difference क्यों होता है? So what are the factors which contribute to behavioral differences or different personalities? so it's not just the brain it's just like जैसे सारे इंसान again everybody is unique we have different genome we have different like gene patterns हमारे अलग होते हैं सब unique है everyone is unique in their own ways but then they are similar as well Yeah. no it's common Structurally, to we have are two similar. Yeah. yes it's common to have otherwise doctors wouldn't have been able to treat us Yeah. right Yeah. That makes sense. स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है सबका पेट एक ही जगह होता है हाँ है ना हाँ. सबका हार्ट लेफ्ट में ही होता है Yeah. इफ यू आर नॉट सिनेमा कैरेक्टर तब आपका हार्ट राइट में हो सकता है Yeah. और कुछ कुछ लोगों का एक्चुअली राइट में हो सकता है बट दोज आर एक्सेप्शंस दैट्स द थिंग दैट देयर ऑलवेज बी कॉमनैलिटीज एंड देयर ऑलवेज बी एक्सेप्शंस Yeah. so similarly brain may be structure same है but behavior is not a result of simple physiological coding या एक it's not a result of like something coded uploaded and bam you're born and everything is there it's a result of the and brain is the raw material, that physiological thing and that coded thing. We are born with a blueprint, but उसपे build up क्या होगा वो तो environment के साथ interaction decide करता है. तो Even in even in sorry yeah tell me. या मैम, तो एनवायरनमेंट के बारे में आपने बोला, और जो हमारा हार्डवेयर है, दैट इज़ द ब्रेन, दैट इज़ द फिजियोलॉजी. सो दैट केम आउट ऑफ जीन्स, मतलब ब्लूप्रिंट जो हमें मिला वाया पेरेंट्स, वो हमें मिला, प्लस जो एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन होता है हमारा, बीट फ्रेंड्स, बीट द नेचर, बाय एंड लार्ज, तो उससे हमारा ये बिहेवियर डिटरमाइन होता है. तो आपको क्या लगता है, मतलब कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है? ऐसे कुछ साइंटिफिक स्टडी हुआ है? बहुत बहुत it's full and it's a debate it's an everlasting debate वो डिबेट आज भी एग्जिस्ट करता है और वो डिबेट बहुत पुराना है नेचर वर्सेस नर्चर इट्स अ वेरी ओल्ड डिबेट ओके वेरी वेरी ओल्ड डिबेट तो कि मैम इसमें नेचर थोड़ा का सा ब्रॉडली आप थोड़ा यस यस बता सकते? श्योर श्योर नेचर नेचर बोले तो द जीन्स द जेनेटिक स्ट्रक्चर द इनहेरिटेड व्हाटएवर वी हैव इनहेरिटेड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यादा डिटर्मिनिस्टिक है ज्यादा कंट्रीब्यूटरी है या फिर द अदर थिंग या फिर नर्चरेंस यानी कि क्या एनवायरनमेंट आपको मिला आप कैसे ग्रो कर रहे हो आपका आसपास क्या है so that's nature versus nurture that again what you said right that was the question that is the question that people pose कि अगर है भी तो कितना कितना इंपॉर्टेंस है 50-50 है क्या 70-30 है क्या 30-70 है क्या what So, is it so is there तो a study? ऐसा there are plenty like that's the thing that's precisely what I was talking about actually I was coming to that there are studies among and these kind of studies are done among twins a lot because twins में एक है कि especially identical twins and there's a difference between identical and fraternal twins I hope you know Yeah. if
I'd make it clear just once. For like identical twins have the same genetic structure because they have they're from the same zygote, same. But fraternal twins have different genetic structures. So they might be twins, but they're like any other sibling. So these identical twins, they have been twins who have been separated at birth, raised at in different environments. They have been studied for different characteristics, personality characteristics, preferences, interests, habits. So plenty of similarities have been observed. I mean, when I was in undergrad, so it's long back. So I don't remember the name of the scientists, and they were social scientists. So I'm pretty sure that there must have been many more studies in this during this period. But at that time, I used to study these researches where, say, for example, there were two identical twin brothers who were separated at birth, and they were in both in the Western countries, someone in Europe, one European country, someone another. Both were coincidentally named Bob. Both grew up to be firefighters. Both kept a mustache which was similar. Both had similar hairstyles and similar bellies, similar body structures. Both married a woman named Marie. Like, but these sound like pretty coincidental. Yeah. Like, let's look at the normal, like usual cases. So, usually it has been seen that yes, there are similarities for preferences. So, like, yeah, there are certain like it's very strong genetic connection, but that doesn't mean that there won't be differences. Even if it is the same zygote that has split into two, Yeah. even if Identical their twins. Yeah. absolutely entire, same genes, Yeah. but if environment is different, they'll be different. Even if the environment is same, still there'll be certain difference. So nature, I mean, the debate is regarding the percentages, but I think there are many ways to look at it. I mean, no matter what, you cannot deny anyone's contribution. I mean, there are places where the nature will show its impact, and there are places where the nurturance will show its impact. And both have strong roles to play. That is the whole reason why, um, like, we talk about diabetes, and we are concerned if somebody in the family has it. Yeah. We know that things are genetic. So in other fields, not in psychology, but in physical things, we do consider these things. Why not? Yeah. 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 तो मैम So जो physiology the physiology which we got, that was through a blueprint which we got from our parents, right? So mhm. that is something which we are referring to as nature. तो मैम उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेन तो बन गया, ठीक है, ब्रेन बन गया, उसमें न्यूरनल कनेक्शंस बन रहे हैं, उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होगा बिहेवियर में? ऑब्वियसली दैट गेट्स ट्रेन्ड बाय द इंटरेक्शन विच वी हैव विद द एनवायरनमेंट. उसका लेकिन मैनिफेस्टेशन एज इन द core manifestation of what you are speaking as the contribution of nature in a human behavior, वो कैसे होगा? If it is not completely environment, if it is also nature, so then how is it happening? Like, so then so then we need to understand what do we mean by behavior. How do we understand the term behavior? What does behavior mean? So यहाँ पे behavior का मतलब होता है any action, anything that any activity, anything, even breathing yeah, is a behavior. yeah, So if an organism is breathing, so like suppose a fetus is moving and inside the mother's belly, it's a yeah, behavior. Or the fetus kicks a lot, and the fetus doesn't kick, it's a behavior. So behavior starts right from conception, some form of behavior, not exactly from conception, but can't really demarcate from where it starts. But yeah, so behavior is very old. It's very wide term. It's a very wide term. ना वहां पे भी डिफरेंसेस होते सटल डिफरेंसेस तो बिहेवियर ऐसे ही मैनिफेस्ट होता है लाइक जीन अपने आप को किसी भी किसी तरह से एक्सप्रेस करता है जैसे हमारी हाइट क्या होगी हमारा बोन स्ट्रक्चर क्या होगा आंखें कैसी होगी ये अगर जीन डिटरमाइन करता है तो ये सारी चीजें भी जीन डिटरमाइन कर सकता है मतलब okay, कर सकता है क्या करता ही है लाइक सो दीज बिहेवियर्स आर आल्सो बिकॉज दीज बिहेवियर्स आर आल्सो पैटर्न कॉमन राइट yeah, every fetus moves about in the tummy yeah, every fetus will kick. yeah, Right. So these are also that means there are certain that means क्या I mean आप एक कुत्ते को खाना डालो उसके बाद जैसे हमारी चुटकी है अभी अब उसको समझ में आ गया है कि हर फूड इज डिफरेंट एंड आवर फूड इज डिफरेंट बट अर्लियर शी डिडंट नो शी लर्नड इट repetition so
when certain things are happening at the neuronal level, certain changes are occurring. Certain changes are Yeah. occurring. Certain new connections are being born. Connections नए नए बन रहे हैं, नई नई wiring हो रही है. Wires that neurons that wire together, Yeah. fight together, Yeah. Yeah. है ना? Oh, Yeah. sorry, fight together, wire together. Yeah. Yeah. ये जो Hebb's rule. So वो जैसे वो कनेक्शन धीरे धीरे जैसे हम भी जब बच्चे होते हैं हमें शुरू शुरू में माँ की आवाज पता होती है उसके बाद हमें पता होता है कि हमारा नाम क्या है लाइक टू लर्न आवर नेम्स वी टुक सम टाइम ऐसा नहीं है कि जन्म से नाम पता है we took time to learn our names we took time to distinguish this is me this is my idea of self this is my hand बच्चे अपना हाथ पूरा मुंह में डाल लेते हैं अपनी टांग मुंह में डाल लेते they don't know कि वो मेरा हाथ है मेरा पैर है they don't feel that later on they realize so this understanding this awareness all these things are manifestations of behavior सब तो behavior ही है, everything is behavior teething biting babbling crawling walking everything is behavior crying it's a behavior I so agree. these are common since these are common manifestations Yeah. manifested in all across human beings Yeah. across species in fact. Yeah. So definitely they must be having a genetic basis. Yeah. Yeah, I and agree. and Yes. and What about yeah, conscious but the behavior? manifestation is different. What about conscious Exactly. behavior? Said now, yeah. Now here we can come to a discussion that what is sentience and what is conscious behavior, and do we have a particular gene for that? So I really don't know whether we have a gene for that, but because we have not come to the conclusive answer of what consciousness is, what sentience is, what pain is. Do animals feel pain? Do plants feel pain? Do they have conscience? Do they feel? Do our dogs miss us when we leave them? Blah blah blah. What not? He, you can have a debate between vegetarians and non-vegetarians and vegans about this, right? Yeah. So these about feelings and sentience and emotions and blah blah blah. So some people consider it to be like an hierarchy. We are at the top, you know. Uh, from the philosophical level, हर जीव समान है, सब soul is soul का, सब all souls are equal. So that's again a debate. There's no answer to what it is. But yes, some scientists have tried to amalgamate, fuse, and then say that it is an emergent property. It is an emergent property. Life itself is an emergent property. But let's say consciousness. I mean, I saw a beautiful video from this on this channel called Gesagt. It's a German word for in a nutshell, and they have beautifully shown what consciousness is. That it's just some chemical reaction to let's say first of all let's assume let's not confirm कि हाँ यही है. So life began as some form of chemical reaction and something was produced which had a need to move. It moved. Something moved. It was mobile. And then since it had to move, it found a source of light. It developed a relationship, a chemical relationship with the environment. And then it had a mouth, it had to eat. So how gradually the sense organs develop the need to develop sight, the need to develop vision, the need to develop audition, the need to eat, the need to ingest, and then how gradually the mitochondria got infused. And once the mitochondria was infused in the cell, it was like, okay, now we have developed a relationship. You will work for me. I will think for you. I will work hard for you, but you will work for me. You will produce the food. Yeah. I'll get the food. You will just transform it into energy, which is good to me. So from that viewpoint, we physiologically are essentially uh, um, not a single organism. We are so many things, just so many bacteria, so many symbiotic relationship going on in our body, Yeah. but we consider ourselves as a unified one. So physiologically, तो ऐसे बोल ही सकते हैं कि ऐसा बहुत कुछ है. There are a Yeah. lot of things, but consciousness is that one thing, that unified thing. That is probably consciousness. So that is an emergent property. Yeah, consciousness is itself a very deep topic because Yes. physicists भी काफ़ी consciousness के बारे में सोचते हैं, psychologist, I'm pretty sure psychotherapist and I the think I people think who that is study. the question. I mean,
the irony lies there. I mean, by definition, I think जो consciousness के बारे में सोचता है वो सबसे ज्यादा conscious तो वही होगा ना. हाँ हाँ, कॉन्शियसनेस के तो बारे में सोचने के लिए आपको एक काइंड ऑफ फीडबैक भी चाहिए, लाइक हाँ, इंट्रोस्पेक्शन का एक एबिलिटी होना चाहिए इंसान के insight, पास, या insight, इंसाइट, हाँ, insight. या अदरवाइज यू वुडंट बी एबल टू थिंक अबाउट कॉन्शियसनेस. बट हम्म, some people, there are few people who think about consciousness in a completely physical, I mean physics के सेंस से वो सोचते हैं consciousness के बारे में. And yeah, that is quite I mean different way of thinking about consciousness. या मैम, हम्म, साइकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी के थ्रू हम ब्रेन को कैसे समझते हैं, लाइक हाउ इज साइकोलॉजी रिलेवेंट टू ब्रेन. मतलब एक तो साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो मेडिसिन देते हैं लोगों को, और हम्म, हाउ इज साइकोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम साइकियाट्री, एंड हम्म. मतलब उसका ब्रेन के साथ कैसे रिलेशनशिप है. Okay. I would try to answer that. It's a very common query, and it's a very good question. The, तो ब्रेन, एज आई सेड अगेन टाइम एंड अगेन, कि इसको एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह समझते हैं. या ब्रेन तो सीट है, वो या हार्डवेयर है. या तो वो तो बॉडी का एक ऑर्गन रहेगा ही. तो जिस तरह से हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट है, हाँ, तो सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, सिर्फ वो पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखेंगे ऑब्वियसली. तो इट्स अबाउट systems. It's about gastrointestinologist. Intestinologist is about the entire gastro gastric system, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. तो वैसे ही ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम है हमारा, उसके लिए साइकाट्रिस्ट है. न्यूरोलॉजिस्ट तो है ही पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, बट पर्टिकुलरली ब्रेन के लिए साइकाट्रिस्ट है. Psychiatry is that part which relates to brain and its particular manifestations about emotional disorders or psychiatric disorders. It's about disorders. कि what went wrong? क्या खराब हो गया? अच्छा, केमिकल ऊपर नीचे हुआ है, क्या कम हुआ? ये कम हुआ है, थोड़ा केमिकल्स अप डाउन कर दो. So all this medication is about the chemicals in our brain called neurotransmitter. छोटे 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 से bags में, छोटे छोटे sacks में रहते हैं, and they like I like to refer them to postmen. वो बस इंफॉर्मेशन लेते हैं, देते हैं, फिर देते हैं, फिर लेते हैं, यही करते हैं. खुद कहीं रुकते नहीं है, या इनका काम नहीं होता रुकना कहीं पे. बट दे प्ले अ वाइटल रोल. और उनके आने जाने के रेट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है. सो दोज आर द केमिकल्स, एंड there's like a burst of them in our body. Hormonal system है हमारा, endocrine system है हमारा. So this endocrine system, this nervous system, they interact. ये कुछ hormonal system होता है, कुछ nervous system होता है. Chemicals, बहुत chemical flushes होते हैं हमारी body में constantly. We are not aware of those things. So psychiatrists deal with this ये amount of these chemicals in the brain क्या है, brain को structurally कुछ धक्का पहुंचा है क्या, किसी एरिया में कोई डैमेज हुआ है क्या. सो it's mostly about the fundamental is the physical structure. That's the fundamental. ओके. When we are talking about the psychiatrist, uh, तरीका हमारा जांच करने का सेम ही होता है, सेम ही सवाल पूछते हैं हम, सिमिलर सवाल पूछते हैं, लेकिन या ट्रीटमेंट का लाइन अलग है. या Maybe the inquiry will be similar, because if a person comes and says that I'm feeling like I'm worthless, I'm useless, I don't want to live, I'm not liking the things that I used to like, शायद एक साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट सवाल सिमिलरली पूछेगा, लेकिन उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होगा. लाइक so psychiatrist will be like, okay, looks like the level of serotonin is very low, you should start with some SSRIs to make you feel better, blah 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 blah, कुछ medicines होंगे और. So, which is true. I mean, obviously, if without any rhyme or reason, or even if there is a reason, there's a significant drop in the activity, there's a significant appetite loss, there's a significant weight loss, एकदम कुछ नहीं मन कर रहा है करने का, अच्छा नहीं लग रहा है, worthless. There's a definite chemical issue. So that's a line of treatment which is valid. या But then people are not much convinced about it, and psychologist का approach जो होगा वो होगा कि let's try to find out what are your thoughts, what are your feelings related to this, how you are actually behaving, what you are actually feeling, and what you think you are feeling. So a little bit of या analysis, a little bit of breaking up into how our brain basically works, how we think, how we tend to misinterpret ourselves. We think we are very rational. We are not. So that's या the crux. That we are not very rational. We are emotional beings, right?
Yeah. So psychologist would take care of the emotional part. That's the part that the psychologist will take care of because we fail at understanding emotions completely. Just like, just as if my computer breaks down, I don't know about it, how to repair it. I'll take it to someone who knows about Yeah. it, right? So Yeah. similarly, like it's a system. मैम बट एसेंशियली आप इमोशंस के बारे में बात करो, उन उसका भी तो बेसिस केमिकल्स ही हैं. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स यही तो हैं उनके बेसिस. तो हाँ, आप रॉ मैनिफेस्टेशन. इमोशंस की बात करें तो अगर हम रॉ इमोशंस की बात करें बट वो मैनिफेस्ट होते हैं थ्रू कल्चर, थ्रू लैंग्वेज, या. है ना. सो रॉ इमोशंस क्या है? एक बच्चा रोता है, वो रॉ इमोशन है. वो हंसता है, वो रॉ इमोशन है. उसके सामने पेपर फाड़ो, वो हंसेगा. कोई मतलब नहीं है, वो हंसेगा. सो रॉ इमोशंस आर रॉ इमोशंस. या. We don't live with raw emotions throughout our world. We या. talk, we learn to play, we learn games, we learn to put up a face, we learn to lie. There's so many things that we learn later on. So emotion तो प्योर और रॉ और ऑथेंटिक रहते हैं, ऑब्वियसली अंदर रहते हैं, पर हम उनको समझते नहीं, हम भूल जाते हैं वो चीज. Even वी even डोंट in नो. cases of people who have been affected because of some mental disorder, तो mental disorder हम किस तरह से define करते हैं? Is that a सी chemical imbalance in the नॉर्मैलिटी. brain, or is that just a manifestation of uh, some chemical imbalance? How do we define mental disorder? Manifestation को बोलेंगे या फिर chemical imbalance को बोलेंगे, which is ओके, causing that behavior? लेट्स गो by the lexicon, by the term. So if it's disorder, we need to know what is order. So if you want to know what is abnormal, you need to know what is normal. Yeah. It's very difficult to define. But Subjective है. to Is it? subjective exactly nahi hai. It's Okay. not entirely subjective. Okay. It is normative. It is statistical. Okay. Uh, it varies. Say for example, in statistics, in core statistics, normal is Gaussian curve. Yeah. The normal probability curve is Yeah. normal. Yeah. So many characteristics follow this normal probability curve. Yeah. है ना. अभी आप कुछ चीज वैसे ऊपर से ऐसे डालोगे, फेंकोगे, वो भी एनपीसी बन रहा है, वो अपना फिजिक्स का हो गया. Yeah. और इधर साइकोलॉजी में ये हो गया कि जैसे आईक्यू या फिर हाइट हाइट ले लो, फिजिकल Yeah. कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं. बहुत लंबे लोग भी बहुत कम है, बहुत Yeah. नाटे लोग भी बहुत कम है. Yeah. मोस्ट पीपल हैव एवरेज, Yeah. राइट. सो एवरेज इज एवरेज, इसीलिए तो एवरेज को एवरेज बोलते हैं. Yeah. सो दैट इज order, that is normal. Now if somebody is deviating from that, जो देखने में अखरे, जो देखने में अटपटा, सिर्फ देखने में नहीं, फील करने में, और सिर्फ it's not just about feeling, it's about functionality. अगर वो इंसान की काम करने में बाधा ला रहा है और significant amount से ला रहा है, then we call it a disorder. So if somebody is sad, heartbroken, grieving, not able to function because suppose there's a heartbreak or because lost somebody or business ka loss ho gaya, whatever the significant reason, the person should be allowed to grieve. It's not abnormal. It's not abnormal. Abnormal तब होगा जब वो उससे निकल ही नहीं पा रहा है, या फिर काम हो ही नहीं रहा है, या फिर significantly बहुत deterioration हो रहा है. I mean, even if, and I would like to go a little off topic here because it's important that people have this thing that abnormal लोग ही जा सकते हैं psychologist या psychiatrist के पास. ऐसी कोई बात नहीं है. Even the example that I just stated, that if a person has lost something or someone and the Yeah. person is grieving, Yeah. and that person needs grief counseling or understands that it will help the person to get out of this a little easier. Things, अभी हम जब commodities या amenities use करते हैं तो चीजें क्या करें, थोड़ा to make life a little easier, है ना. I'm sitting on a revolving chair to make life a little easier. Yeah. Right. But we won't make life easier by asking for help from psychological help. We don't do that. या. So, मैम इसमें एक क्वेश्चन है मेरा. जैसे आपने बोला कि कोई पर्सन ग्रीव करता है तो मे बी दैट इज नॉट नॉर्मल बिकॉज द पर्सन डज नॉट फॉल इनटू दैट एवरेज कैटेगरी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो काफ़ी सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेडरिक नीशे एंड सिगमंड फ्रॉइड, हु देमसेल्व्स हैड प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ. दे वर प्रोबेबली ग्रीविंग. सो वो किसके पास जाता है? दे देमसेल्व्स वर साइकोलॉजिस्ट, राइट? और उनका इंसाइट जो आया है बिकॉज दैट केम आउट बिकॉज ऑफ द ग्रीवेंस
which they faced in their life. Well, Yes, जो भी Nietzsche, loneliness था, Nietzsche was a philosopher. uh, Nietzsche was a philosopher, not a psychologist. And Freud was not a psychologist per se. He was a physician. He was a doctor by profession, actually. You know, he studied with his thesis was on the use of cocaine as an anesthetic. yeah, I heard about that. Yeah, he Yeah, was an yeah. addict. So Yeah. and So why would yeah, I that is not call him a no. psychologist, man? He was not an addict of cocaine. He used to smoke cigars. He had jaw cancer, so his addiction was different. And he described his own addiction. He psychoanalyzed his own, like, the shit out of his own life. So he did psychoanalyze himself as well, and his own. It was his oral fixation, according to him, with the cigar thing, and that took his life. So see, I don't know where they went. That's a question like I would ask at their grave, definitely. That where did you go for help? But what he did was was an act of rebellion and very brave act, I would say. That he at least put forward what he thought. I mean, it was there all around. People were just neglecting, ignoring it. You So know, was there no sex and scientific aggression. basis to what he was saying? Why would we not call him a Uh, psychologist? He came up with ideas like id conscious. I mean, id, the superego, and ego. So yeah, he did these bring are about, but these are all hypothetical models. I mean, I love Freud. Okay, I love him and psychoanalysis. That, but his school is. I mean, I'm talking about the term. See, we are getting lost in terminologies, getting lost in. yeah, But these terminologies of words, they just help us classify things. So, yeah, on one hand, we don't want classification. On the other hand, we do need classification. So that's the problem. So when you want to classify, you have to classify on some basis. There has to be some criteria on the basis of on the basis of which you are classified. So if you're saying something is science, something qualifies to be science if it is like there is a list, okay, it has to be repeatable, it has to be empirical, it has to be la 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 la. So so of course, Freud's theory doesn't stand up to those criteria. That's why we don't call it science. There's no proof. But since we cannot prove anything, doesn't mean that it doesn't exist. So, like everybody dreams, and we yeah. all have common dreams. We all have similar dreams, similar themes. We all dream of socially unacceptable things. So things have always existed. We just didn't talk about it. So Freud spoke about it, and everybody was like, "Oh my God, Maybe he's out that of makes his sense. Yeah, mind." yeah. I mean, Yeah, I mean, what he was saying makes sense. That is what I was trying to convey. Yeah, uh, yeah, yeah, so that is like about the Freudian thing. So I yeah, don't know where they went, but yes, one thing is there that whoever you read, whoever is reading any psychologist, uh, it's again. So Rutherford, Dalton, they developed these. They were like atom कैसा है, atom yeah, कैसा है, atom कैसा है. yeah, Psychologists are like दिमाग कैसा है, brain कैसा है, mind कैसा है. ये उनका सवाल है, right? yeah, So everybody came up with their own models. साइंस का ये है कि द मॉडल्स वे वेरी आसपास थे. आसपास क्यों थे? क्योंकि एक्सपेरिमेंट उसको बैकअप कर रहा था. यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंटेशन तो था नहीं. बिफोर विलियम वुंट देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटेशन. बिफोर द लैब was built, there was no experimentation. So it was all based on like क्या सोच रहे हैं लोग, कैसे मॉडल्स बना रहे हैं, जो देख रहे हैं उसके बेसिस पे इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं. So some people were thinking कि ब्रेन ऐसा होता है या फिर वैसा होता है. So Freud was like कि नहीं, ईगो सुपर ईगो ऐसा होता है. Then somebody was like नहीं नहीं नहीं, इतना इतना बचपन में मत जाओ. Like don't go into that. Let's look into the brain and structure. And um, some schools were like, no, no, everything is behavior. Nothing is determined by the childhood. Like what the behavioral school said, that you give me any child and you tell me what to make it the child into, I'll make it. So it's like जैसे हर जानवर बिहेव करता है वैसे हम भी बिहेव करते हैं. जैसे हम कुत्ते को ट्रेन कर सकते हैं, बिल्ली को ट्रेन कर सकते हैं, वैसे इंसान को भी ट्रेन कर सकते हैं. एंड टू yeah, सम एक्सटेंट अगेन दैट इज पॉसिबल. We are yeah. all getting trained in some way. We are all getting reinforced. So all theories have some bits of truth. It's not we're we're not looking towards singularity. Just like in Yeah. the natural sciences, we are moving towards singularity. In psychological sciences also, obviously, अगर कुछ होता है तो बहुत बढ़िया है, but actually singularity नहीं exist करती है. In fact, और ज़्यादा multiplicity है, और ज़्यादा variety है, और So ज़्यादा लोग basically, हम crop up करके models अलग अलग बनाते हैं, and आएंगे. whichever model suits best and is backed by experimental evidence, we pick up Hmm. that model. Is that what you're trying to Yeah, say? Yeah. yeah, Okay. and psychological models are based on
statistical researches. It's again and case studies. So there are unique things, and then there are commonalities. Like on the basis of the like surveys from thousands of people, we come to conclusion कि हाँ अगर thousands of people ऐसा कर रहे हैं तो कुछ तो behavioral pattern होगा. Yeah. And on the other hand we have these unique case studies जैसे वो Phineas Gage वाली case बताया या फिर the behavior of unique people some way or unique brains like we have like disorder अगर कहा जाए तो वो दो ऐसे दो चीजों से हो सकता है like as you said the chemicals it's not just always the chemicals again it's about the shape of the brain the wiring of the brain the connections of the brain uh, the structure of the brain basically so it varies like Yeah. like in dementia in Alzheimer's it's the structure of the brain that gets affected it's the physiology of the brain that's affected Yeah. there are plaques there are nodes ऐसे जैसे दांत में प्लाक जम जाते हैं वैसे ब्रेन में प्लाक जम जाते हैं फिर ब्रेन Ma'am, could you श्रिंक होने please लगता है explain what Alzheimer's is and उसका treatment कैसे होता है? Alzheimer's. Yeah. Okay, so Alzheimer's is a class of that is something very different. It's called neurodegenerative disorder. So Yeah. these areas are shared by psychology and neurology. Yeah. मतलब ये किसी की जागीर नहीं है ठीक है ये Yeah. सब शेयर करते हैं इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी चीजें हैं क्योंकि इन सब चीजों में सबका रोल है बिकॉज इट्स अ ह्यूमन थिंग वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन मशीन अगर है तो मशीन का एक पर्टिकुलर आप नंबर क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, एरियाज इट होते इज हैं बेसिकली फैसेट्स आप ऑब्जेक्टिव. डिफाइन कर आप सकते उसको हो फिजिकली ऑब्जेक्टिव है देख सकते हो मशीन्स को और उसको ट्रीट कर सकते हो वाया आप ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो मेथड्स. पाते हो या बट मेरे को बट जितना लगता ह्यूमंस है कि में तो ब्रेन ब्रेन में इमोशन एज आई मीन लाइक व्हाट यू सेड हार्डवेयर प्लस हम्म सॉफ्टवेयर है वो. सो हम्म वी शुड टॉक इन दोज टर्म्स. हम्म तो सॉफ्टवेयर हम्म अपडेट करने का बात हुआ. सो आई वुड वांट टू आस्क यू दिस थिंग कि सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बात करें तो क्या अल्जाइमर्स का साइकोलॉजिकल बेसिस भी है क्या? Is yeah can the that's what I brain was coming to degenerate itself exactly on the basis of let's say a person's mental state, mm-hmm. or is No a person's mental state because of the brain damage, or let's say the brain degeneration which is mm-hmm. happening? No, yeah. So basically, as the name suggests, it's a neurodegenerative disorder. So it happens because of the neuronal damage. वो होता है actually brain में beta amyloid proteins, I mean these are technical terms, and plaque ये brain में deposit होते हैं. तो इन deposits की वजह से there are disruptions in the brain function, memory affected होने लगती है. So overall जो umbrella term है वो है dementia. Yeah. Dementia is ऐसे usually age related forgetfulness Yeah, जो होता है. loss of memory. Yeah. But Alzheimer's is a special case of dementia. जैसे Parkinson's is Yeah. also a special case of dementia. Huntington is a special case of dementia. So these are all like genetic, highly genetic. जीन्स पकड़ में आ जाएंगे किसी के भी ऑल्दो डिजीज प्रोग्रेस होगा होते होते बुढ़ापा आ जाएगा बट आजकल जीनोम टेस्टिंग जीन टेस्टिंग की वजह से पता चल जाता है कि ये है जैसे कैंसर के जीन्स होते हैं वैसे सो ये हाईली हाईली बायोलॉजिकली ड्रिवन है बट साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन तो होगा ही से फॉर एग्जाम्पल किसी एक्सीडेंट में दो लोगों का हाथ टूट गया किसी को बहुत ज्यादा बीपी हो गई एंड समबडी इज लाइक अरे चलो कोई बात नहीं है सो हाथ तो दोनों का टूटा है तो अलग अलग मैनिफेस्टेशन क्यों है वो बिहेवियर है वो पर्सनालिटी है वो अबिलिटी टू हैंडल थिंग्स है परसेप्शन टुवर्ड्स पेन है जो भी है बहुत सारे रीजंस है सो नाउ दैट्स द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कि अगर अल्जाइमर्स है किसी को so that person is gradually losing their memory. It's so difficult because our first sense of this world is us. Imagine, like, if you're losing your sense of self, if you don't know what is your and what is not your. So that's a very difficult thing for the family, for the person, obviously, and for the family. So this is an emotional aspect because suddenly, if I remember that, oh, I have been forgetting this person all my life, and अच्छा मुझे आज बहुत सालों बाद याद आया कि ये तो मेरा बच्चा है या कोई है so Yeah. it's painful for the person it's painful for the people around as well that is where the psychologist steps in so that they don't get emotionally overwhelmed or even if they do they know how to handle it so psychologists play a vital role in handling actually the caregivers the role of psychologist is primarily here no, I'm not saying that it's not there in the patient because patient की stage पे depend करता है अगर वो intervention लेने की काबिल है इस वक्त so why not so if I'm an early onset Alzheimer's and I know that
आगे ये होने वाला है. If I'm psychoeducated nicely, if I'm taking medication, if I'm aware, then I can handle it on my own. Like, Yeah. by not, Yeah. like, Yeah. because neurodegenerative disorder, aging, all these things are, caregiver burden तो होता ही है ना. Yeah. So, so people think that जितना मैं खुद कर सकूं. So psychologists help there, and psychiatrists and neurologists, they will be helping in the medication part. कि Uh, कैसे मेडिकेशन देके वो उसको अरेस्ट किया जा सके, Ma'am. कैसे मेडिकेशन देके वो डीजनरेशन को अरेस्ट किया जा सके. Yeah. Yeah. So डीजेनरेशन क्या बस मेडिकेशन से ही अरेस्ट किया जा सकता है या फिर साइकोलॉजिकल ट्रीट? बिकॉज आई हैव दिस क्वेश्चन बिकॉज मेंटल स्टेट जो होता है दैट इज वेरी मच रिलेवेंट टू द स्ट्रेस विच वी आर इन. I mean, या there is या some या kind of a relationship, yeah. So, या and stress, amount of stress can be ऑफ called as a कोर्स. सो function यस, of few chemicals. One of them is ट्रू ट्रू ट्रू, glucocorticoids. वेरी ट्रू, तो वेरी ट्रू. मैम ये जो केमिकल के साथ रिलेशनशिप है ऑफ स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस हैज अ रिलेशनशिप विथ साइकोलॉजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट, तो देर इज ऑब्वियसली अ रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल स्टेट एंड द केमिकल, राइट? सो क्या मेंटल स्टेट को कंट्रोल करके वाया साइकोलॉजी can't we control the chemical state of the brain, and can't that improve the mental health, or let's say reduce the जो mental disorder जो हो गया है, मतलब neuronal degeneration जो हो गया है, उसको क्या रोका नहीं जा सकता है? That is what I'm asking. I think the answer lies in the question itself, that it's not just actually chemicals. You said yourself that it's neuronal degeneration. So it's a Yeah. physiological damage. It's not just chemical up and down. Because chemical up down, as I said, वो तो post में चिल्ला रहा है तो चिल्ले जा रहा है. It's something, the, 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 the amount of neurochemicals is actually very little, micrograms. So इसीलिए दवाइयाँ भी वैसे micrograms में होती हैं. But here we are talking about neuronal degeneration, एंड physiological जस्ट part जस्ट degenerate हो रहे हैं. जस्ट वन क्वेश्चन मैम, ये जो न्यूरल डीजेनरेशन के बारे में बात करें, इज दैट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इज इट दैट इट हैपेंड at once and it's not continuous? Is it so? No, no, no. It happens slowly. It happens slowly. It's Degenerative. So continuous it basically. is Yeah. Yeah. it's happening. I don't know exactly 100% kind of run, but yeah, it happens slowly, Yeah. gradually. Yeah. That's Yeah. it. Degenerative. धीरे खराब होता है. Yeah. So yeah, in Alzheimer's, as I said, that there are plaques formed in the brain cells, and there's beta amyloid protein. There is something that gets like deposited, and then slowly the brain size starts shrinking. So it is much more than just chemical imbalance. It's physiological damage. It's पूरा organ shrink होते हुए दिखता है, like in scans Okay. you can see the brain shrinking. So Yeah. so that's a huge thing. It's not just minor chemical ऊपर नीचे. Okay. It's major. It's major. Hence psychological intervention is not enough in Okay. such things. It is just like it's just like any other physiological terminal disease like cancer. Yeah. Like Yeah. there also psychological support is needed to maybe have a better life in remission, even if it is terminal and the person is in palliative care. We call it palliative care when the person is, when you take care of the dead and dying, and it's you make death easier. That's called palliative care. Yeah. So even in that case, you are simply just trying to make it easier. Yeah. So Yeah. Got it. मैम आप अभी पीएचडी कर रहे हो मैम, तो क्या कुछ रीसेंट स्टडी हुआ है या फिर कुछ रीसेंट इंफॉर्मेशन, कुछ एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन आया इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी? आप अगर इसमें कुछ लाइट डाल सकते हैं तो, well, या in फिर the ब्रेन के recent बारे में कुछ अगर नया इंफॉर्मेशन, कुछ एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन अगर आया है तो, विच वाज लेट्स से well, अ there's so मिथ अबाउट much. ब्रेन? या Well, to be very honest, इतना ज़्यादा varied field है ये. Psychology इतना diversified field है कि if you're talking about brain, then psychology is not the only field which is working in brain. In fact, अभी तो in fact कुछ भी singular ऐसे नहीं रहा. Everything is multidisciplinary. So if you're excited about knowing about brain, तो वो तो singularly psychology करेगा ही नहीं. Rather, a lot of studies are coming up where AI या and brain and this the study of emotions and perceptions and cognitions. ये बहुत ज्यादा studies आ रही हैं because psychology में भी this is another like field, cognitive psychology या फिर brain
एंड कंप्यूटर इंटरफेस इसको Yeah. स्टडी करना, Yeah. मैथमेटिकल मॉडल्स Yeah. कंप्यूट करना, एमएल में इसको देखना, फिर another one is your studies about how eyes and how ears, how our body systems work, how our brain and neurons get trained. So at the very neuronal level भी research हो रही है बहुत, Yeah. एक एक न्यूरॉन को लेके रिसर्च हो रही है, पर्टिकुलर लाइक रॉड्स एंड कोन्स ऑफ द आईज। Yeah. तो अगर ब्रेन की बात करें तो वहां तक रिसर्च हो रही है कि कैसे जो विजन लेस है उनमें विजन कैसे रिस्टोर किया जा सकता है इफ द न्यूरॉन्स कैन बी ट्रेन्ड। सपोज द न्यूरॉन्स आर फाइन, Yeah. सपोज प्रॉब्लम, a child is born with all the neurons which Yeah. are corresponding to the eye। अब आई का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर सपोज खराब है, उसको रिप्लेस कर दे, लेकिन उन सेल्स ने तो कभी देखना सीखा ही नहीं, क्या हम उसको रीट्रेन कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं? लाइक कैन आवर बॉडी सम वे सम डे लर्न टू रीजनरेट इट्स पार्ट्स? So trying to learn these things, trying to learn from nature around, trying to understand our own selves. So just imagine a scenario where a brain is looking at itself, or you are just looking at your own brain and you're trying to study itself. So we are like that. We'll always be behind ourselves. Yeah, We'll obviously. always be like, Yeah, because we are thinking yeah, about ourselves and the source is us, and that is what we are trying to yes, study about. So yes, it's quite, it's yes. quite complex. Therefore, that introspection and जो feedback होता है, Yeah, I think it that has is where been it like comes in. a, Yeah. मतलब पूरा इवोल्यूशन ही लगता है कभी कभी, इट्स अ सीरीज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज है पूरी। ओ रियली ऐसा हुआ, ओ रियली इट्स माय हैंड, लाइक अ चाइल्ड इज डिस्कवरिंग, अच्छा ये Yeah. तो मेरा ही Yeah. हाथ है जो मैं अभी तक खा रहा था। Yeah. ओ Yeah. अच्छा, आई दिस यू नो like toilet training, it is under my control. Oh Yeah. wow, it's a series of realizations throughout Yeah. life. Yeah. 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 So matlab, from those realizations to the things that okay, I can do this, I cannot do this. Oh acha, there are people who are going to ditch you, then there'll be heartbreaks, and then there'll be tough life, blah blah blah, whatever it is, a series of realizations, I guess, Man, series of awareness. what do you mean by realization? ये realization होता क्या है? I mean, I'm just talking about the term realization. ये realization Well, क्या होता है? realization and awareness are two different things. I shouldn't use them interchangeably. Realization is just s- something coming to awareness Yeah. in a particular form, I would say. Yeah. Something that Yeah. is coming to my awareness at this moment in a particular form. Yeah. That's like, आपके it's conscious में just basically आ गया and you are able to process that. Yeah. आ गया लेकिन एक पर्सपेक्टिव आया। Yeah. It's Yeah. not that I realize a particular thing today and it's done. I can realize something else about the same thing again. Yeah. मैम, So it's a देयर इज़ different. अ थिंग फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन कि Mhm. लोग इन जनरल जब तक कोई कोई चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं तब तक वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं होते हैं। एज इन आप किसी को एडवाइस दे दो लेकिन वो एडवाइस मानते नहीं हैं लोग जब तक वो Mhm. रियलाइज़ नहीं करते हैं कि दैट एडवाइस वाज राइट। तो Mhm. मतलब काइंड ऑफ एक एब्जॉर्प्शन ऑफ एन आइडिया है रियलाइजेशन, मेरे को ऐसा Yeah, लगता है। yeah, या yeah. Sounds quite good. Yeah, absorption and yeah. I mean, just popping awareness. I look at it like something opening up. It's या like pop up, opening of या the eyes. It's like या okay, I get मैम, it now. कुछ ऐसे मिथ्स हैं ब्रेन के बारे में जो अभी प्रेजेंटली चैलेंज्ड है। फॉर एग्जांपल, लोग बोलते हैं कि ब्रेन का डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है बिफोर द एज ऑफ 25। नाउ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द स्टडीज इज सेइंग दैट इट कीप्स ऑन डेवलपिंग थ्रू आउट लाइफ और Mhm. मेजरली 25 ईयर्स तक तो होता ही है। Mhm. तो ऐसे और भी कुछ मिथ्स हैं जो डिबंक किए जा रहे हैं वाया स्टडी। Myths, as such, to be very honest, like if you give me the myths, I can debunk or debunk them. ओके। So I don't have any like list of myths like that. But yeah, about the development of the brain, बहुत सारे ऐसे myths हैं, और obviously cultural, socio-cultural myths regarding brain and behavior वो सब ज्यादा है, सब बहुत ज्यादा है, rather than लाइक। like वैसे ही कि people with different like there's something called macrocephaly and microcephaly. Macrocephaly is big head and microcephaly is a small head. So some children are born with a big head and some with a small head. It's because of the size of the brains or because of the amount of cerebrospinal fluid around the skull, some fluid in the skull. So there are some physiological reasons for those things. But then वही
people talk about different kinds of influences, taboos, jadoo. Yeah, Then all of and people those have a can very obviously be debunked by, but हाय hi ma'am. सुनाई दे रहा है ना मैंने Yeah. फाइनली फोन से ही ज्वाइन कर लिया आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस No issues, ma'am. No issues. So, ma'am, I'll repeat the question again. तो मैम, एडिक्शन का एडिक्शन बेसिस क्या होता है, और लोगों को क्यों एडिक्शन होता है, एंड नॉट जस्ट बिहेवियरल एडिक्शन, एक केमिकल एडिक्शन भी लोगों को क्यों होता है, और उसका ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एज इन ब्रेन पे ऑब्वियसली केमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है. दैट्स हाँ माई क्वेश्चन. मतलब ऐसा एक फील्ड है ये सब क्वेश्चंस की इतने मल्टीफेसेटेड आंसर्स है ना कैसे कॉम्पैक्ट बहुत मुश्किल होता है फिर भी आई ट्राई टू जस्ट मिनिमाइज इट सो एडिक्शन कोई भी हो फिजियोलॉजिकल हो बिहेवियरल हो इट्स अबाउट पैटर्न्स फिजियोलॉजिकल केमिकल जब हम बात कर रहे हैं तो ड्रग्स या केमिकल्स का नशा ही इतना क्यों होता है बिकॉज दे आर डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द ब्रेन वो डायरेक्टली ब्रेन में जाके डायरेक्टली केमिकल्स में जाके डायरेक्टली बॉडी को हार्म कर रही है या फिर इम्पैक्ट कर रही है बहुत इनफैक्ट दवाइयों को भी तो हम ड्रग ही बोलते हैं जब हम उसको डॉक्टर के कहे हुए डोजेज से लेते हैं तो वो हेल्प करता है जब उसी या को हम एक्सेसिव ले लेते हैं तो वही नशा करने लगता है बिकॉज सी सो आपने पेट दर्द की दवाई ली आपको स्पैज्म से रिलीफ मिल गया यू फील गुड अबाउट या सो you will be motivated but you also have a component of fear that ये ज्यादा नहीं खाना है ये overdose नहीं करना है it is something potent something dangerous something which has got a lot of potential कि भाई 7 दिन में उसने ठीक कर दिया मुझे कि 2 दिन में ठीक कर दिया उसने मुझे बट ठीक तो अच्छा तो लगा लेकिन अगर ये ऐसी चीज हो कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और डॉक्टर बोले या ना बोले मुझे तो अच्छा लग रहा है मैं और खा लेता हूँ या फिर धीरे धीरे करते करते द ब्रेन स्टार्ट्स गेटिंग डिपेंडेंट ऑन इट द फर्स्ट एडिक्शन में कुछ स्टेजेस होते हैं द फर्स्ट स्टेज इज वेयर whatever you are consuming whatever the person is consuming whether it be any kind of drug any kind of chemical any alcohol कुछ भी वो सबसे पहले तो वो जो फीलिंग वो जो आफ्टर इफेक्ट है वो एक किक देता है कि कुछ तो या अच्छा लगा something different because they take it to a different side of consciousness. It's a different kind of feeling that people maybe like to feel or they feel numb, some relief, something that gives them a kick again फिर वो फिर से ट्राई करते हैं बट ग्रेजुअली क्या होता है कि धीरे धीरे फिर वो सब्सटेंस बॉडी को सहने बॉडी सहने लगती है उसको बॉडी स्टार्ट्स टॉलरेटिंग इट एंड नाउ द टॉलरेंस लेवल इंक्रीजेस पहले जितने अमाउंट से नशा होता था अब उतने अमाउंट से नहीं हो रहा है थ्रेशोल्ड यानी बढ़ कि गया ब्रेन उनका धीरे 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 धीरे. उसके लिए हाँ तो वो क्या करते हैं इसका मतलब ब्रेन धीरे धीरे केमिकली चेंज हो रहा है कैसे चेंज हो रहा है अब ज्यादा की जरूरत है सिंपली चाय या कॉफी ले लेते हैं क्यों या हम शराब और ये सब की ओर जा रहे हैं चाय कॉफी भी नशा है एडिक्शन है या सिगरेट नशा है या तो बिना चाय के दिन शुरुआत में सर दर्द जाएगा ही नहीं ऐसे इट्स बट बिना कॉफी के दिन नहीं शुरू होगा सो बेसिकली इट्स लाइक द ब्रेन काइंड ऑफ क्रेव्स इट So, is क्रेव्स there इट a specific धीरे धीरे center in the brain which gets impacted because of this addiction, or which is addicted to this addiction? Yes, there are specific areas, and the reward centers of the brain in located around the ventral tegmental area. There's this deep-seated circuit in the brain called the VTA or ventral tegmental area. It's a reward circuit of the brain. Say, Yeah, for example, when you have a nice bowl of fish curry and rice, you yes, feel good about it. So it's that VTA that gets lit up. So yeah, there are different kinds of reward which lights up different. There are three pathways of different pathways of the area. yeah, अभी addiction में वही होता है कि if you get too used to that reward, if you want it more, the brain starts needing more of it, and then you develop a physiological dependence. Now it's not just the psychologically यार आज बहुत मन कर रहा है वो नहीं आपकी बॉडी क्रेव करना शुरू कर देती है क्योंकि अभी आपको डोजेज फर्स्ट थिंग इज आपको ज्यादा डोजेज की जरूरत होती है जैसे अभी 1 कप कॉफी से नहीं होता है अभी दिन में 2 कप चाय 4 कप मैं तो दिन में 10 कप चाय पी लेता हूँ बहुत प्राउडली बोलते हैं लोग तो इट्स नशा ही है वो एक तरह का yeah, तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस बढ़ती है उसके बाद फिर आप धीरे 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 करके और क्रेव करते हो और डोजेज चाहिए उसको डोजेज बढ़ जाता है उसका पहले टॉलरेंस बढ़ती है फिर डोजेज बढ़ता है फिर धीरे 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 आप में बेसिकली पहले अब्यूज होता है उसके बाद धीरे धीरे आप में आती है
डिपेंडेंस, आप बॉडी बॉडी आपके उसके ऊपर डिपेंड करने लगती है। उसके बाद आता है एडिक्शन, लास्ट स्टेज इज एडिक्शन, वेयर प्रोबेबली एडिक्शन हम तभी डिफाइन करेंगे या तभी बोलेंगे या तभी लेबल लगाना उचित होगा जब द पर्सन देमसेल्फ इज लाइक, या तो खुद को वो पर्सन हर्ट कर रहा है या तो दूसरे को हर्ट कर रहा है, और इसके इम्पैक्ट, एज यू आस्क्ड, आई एम कमिंग टू द इम्पैक्ट नाउ, कि इम्पैक्ट क्या होता हर्टिंग है। एज इन विच इम्पैक्ट, वे? हर्टिंग हर्टिंग एज इन द दूसरे को नहीं, पर्सन खुद को ही, रियलाइजेस, खुद को ही। खुद को ही साइकोलॉजिकली हर्ट, जैसे कि डिप्रेशन में चले जाना, या फिर साइकोलॉजिकली फिर नम हो जाना, इमोशनली ब्लंट हो जाना, या इमोशनली बहुत हाइटेंड हो जाना, खुद को कभी कभी सेल्फ हार्म भी करते हैं, बट मोस्टली इट्स लाइक आई एम यूजलेस, आई एम पैथेटिक, या फिर गुस्सा, बहुत ज्यादा एंगर, या somehow emotionally displaying themselves in, again, not the usual way, not a functional way, function disrupt हो जाता है। और नशे So की एक will और we चीज है कि उसके call that सोशियोलॉजिकल, person addicted to a particular drug only after there is some kind of uh, I mean disruptive behavior, या फिर उससे पहले ही बोल सकते हैं कि वो एडिक्टेड है, नहीं क्योंकि नहीं वो बोल बंदा सकते तो हैं। उस तरफ ही जा रहा है ना? हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक साइको सोशल इम्पैक्ट इसका होता है, जैसे कि बिना उसके नहीं चलेगा, आई विल बेग बोरो स्टील बट आई वांट टू हैव इट, देन इट्स एडिक्शन। ऐसा नहीं है कि रोज रोज कोई पीता है और 7 दिन बिना पिए चल गया, नो दैट्स नॉट एडिक्शन। वो छुप ओके, के जाएगा, जाएगा, ओके, वो पिएगा ही, वो चोरी करेगा, वो मारेगा पीटेगा, झूठ बोलेगा, धोखा देगा, कहानियां बनाएगा, अच्छा, दैट इज एडिक्शन। सो ओके। एडिक्शन लुक्स, So it's a proper दैट्स एडिक्शन, term. So it's a proper term which इट्स अ medical प्रॉपर टर्म, science यस। uses. Okay. जनरल सेंस में तो इट हैज बोल गॉट देते अ हैं ठीक है, ह्यूज कोई है तो है। साइकोलॉजिकल एंड साइको या सोशल, हाँ, या सॉरी। मतलब जनरल टर्म्स में तो बोल देते हैं हाँ कोई, इफ समवन इज अ ड्रंकार्ड देन एडिक्टेड है, ऐसे बोल देते हैं लोग, लेकिन साइकोलॉजिकल या फिर मेडिकल टर्म्स में उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है। हाँ ओके, हाँ, जैसे ओके, पीपल मे बी सीइंग लाइक एक पर्टिकुलर कोई रिक्शा पुलर है जो डेली पीता है, डेली रोता है, सो दैट ओके, पर्सन इज एडिक्टेड, क्योंकि वो डेली कर रहा है। या वो रिक्शा पुलर है, क्या ही कमाएंगे, लेकिन उससे काट के उसको पीना है। या सो वो एडिक्शन है। तो ऐसे या इट्स नॉट, सोशल इकोनॉमिक क्लास डिफाइन नहीं करता है, हर या क्लास में एडिक्शन होता है हर जगह, बट obviously, the media को दिखाती है सब कुछ, and it's spoken about, इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सीज भी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या लेना चाहिए क्या लेना नहीं लेना चाहिए, किसको नशा बोले किसको नहीं, लॉट्स ऑफ इश्यूज regarding that, बट वो बात की बात है। वैसे addiction is such a wide topic that is a topic for like one podcast, I guess. But more or less मैं इतनी कहूंगी कि it's related to the brain circuitry. It's so abuse is different. कोई कैंपस में थूक रहा है, पी रहा है, एक दिन पी के आउट हो गया या कॉन्क्ड आउट हो गया, इट्स अब्यूज, या इट्स अब्यूज। बट वी वुडंट कॉल फिर दैट पर्सन एडिक्टेड। हाँ, ओके, वो टर्मिनोलॉजी हो जाती है कि ये तो, ओके, या फिर ये तो एडिक्ट हो जाएगा, या तो एडिक्ट हो या गया या है, या या बट ओके, ऑफन इट्स नॉट द केस, द पर्सन माइट बी अब्यूजिंग, ड्रग अब्यूजर है, या या फिर टॉलरेंट हो गया है, या फिर डिपेंडेंट हो गया है, या फिर एडिक्ट हो गया। तो बहुत या स्टेजेस होते हैं, या हम इन स्टेजेस को ध्यान नहीं देते, हम डायरेक्ट लेबल कर देते हैं। एंड साइकोसोशल इम्पैक्ट यही होता है कि इट अफेक्ट्स द फैमिली, बिकॉज यू स्टार्ट लाइंग, यू स्टार्ट बोरिंग, स्टीलिंग, स्टीलिंग इज वेरी कॉमन अमंग एडिक्ट्स, ये जो यंग एडिक्ट हो, ओल्ड एडिक्ट हो, जो भी हो, इट्स वेरी कॉमन। सो these are the behavioral manifestations of addiction, so it's not just physiological, उसके सोशल और मैनिफेस्टेशन फिजियोलॉजिकल ऐसे कैसे आएंगे। होते हैं मैम, एज इन ब्रेन में सर्किटरी के अलावा फिजियोलॉजिकल, मतलब स्ट्रक्चरल कुछ या श्रिंकिंग होगा लॉट्स ऑफ ब्रेन डिफरेंसेस। का कुछ पोर्शन का, वो ऐसा कुछ बहुत होता है? कुछ होता है, केमिकली बहुत कुछ होता है। there's this chemical called acetylcholine which is very important for memory function and learning in general. या That gets affected. uh, Vitamin B absorption gets affected because of alcohol, the consumption, continuous alcohol consumption. There's something called Korsakoff syndrome where you tend to forget things, like big chunks of life आप भूल जाओगे, एपिसोड्स भूल जाओगे, so memory disruption होता है। So a lot of, yes, a lot of organic damage होता है, long term abuse से होता है। If you drink very small or moderate amount, it is rather considered to be good for the heart, but for the brain, like continuously drinking, heavy drinking, brain से पहले ही तो लिवर खराब हो जाता है, लेकिन अगर लिवर किसी तरह से बच गया तो ब्रेन तो आपका जाएगा ही। या So yes, there are certain disorders, especially it affects memory,
And for pregnant women, there's something called fetal alcohol syndrome. Yeah. So, if pregnant women consume alcohol, the child is born with a lot of deficits. Maybe, I mean, most likely, but not may not be as well. But most likely, the child will be born with certain deficits, like widely spaced eyes hoga. Certain physical features are similar, and then intellectual disability हो सकती है. So these are certain like fetal tiredness होता है उनमें. Like there are certain behavioral But why would that characteristics happen, common to them मैम? बिकॉज because वो alcohol आउटपुट जो affects है, metabolism. ओके मतलब चाइल्ड का फीटस का मेटाबॉलिज्म में पंगा हो गया. हाँ हाँ ओके. बिल्कुल मदर का ओके. मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है और मदर का या ब्लड या ब्लड में जो मिल या जाता है ना या ब्लड या ब्रेन बैरियर क्रॉस या कर जाता है या अल्कोहल. या 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 मेक सेंस. या सॉरी. मैम एक सो क्वेश्चन अलग है. अलग नशा हाँ. का हाँ. लेट मी जस्ट ऐड टू दैट दैट अलग अलग केमिकल्स का अलग अलग टाइप का इम्पैक्ट होता है ब्रेन पे. सो या लाइक लाइक हार्ड ड्रग्स जो होते हैं लाइक कोकेन एंड एल एस स्नॉट टी, जो करते हैं लोग डी एम एलएसडी टी. या they have a different kind of बहुत सारे research is a peyote then LSD. Now microdosing has been seen to affect people in a different way or dosing under supervision for medical purposes is different. But लोग जो खुद से consume करते हैं day after day after day after day, these are very hard drugs. They alter the brain chemistry very heavily. So या उसमें consciousness का level तो change होता ही है, but brain chemistry धीरे धीरे change होती है, आपका perception change होने लगता है, you start hallucinating. या those are not those are not organically normal. Those are not, if you're seeing something which is not there, you're hallucinating, you are not understanding what's going on, so it makes difficult for you to stay in contact with reality. या So drugs have that altering capacity. The hard drugs and all, they do alter the brain chemistry. Then marijuana, long-term marijuana use has got a lot of cognitive like deficits. Later on, या cognitive deficits हो जाते हैं बहुत सारे. या So अलग-अलग drugs अलग-अलग तरीके से काम करते हैं. अलग-अलग deficits होते हैं. पर होते तो हैं. हर drug, even a medicine like spasmoproxivin, which is like पेट दर्द की दवाई है, लोग उसका भी नशा करते हैं. या लोग लोग कफ सिरप का नशा करते हैं या टॉरेक्स लाइक. सो नशा किसी भी चीज का कर सकते हैं. एनीथिंग इज एन एडिक्शन इफ डन इन एक्सेस. मैम. नाइस. सो मैम एक एक क्वेश्चन है. मैम बिग फाइव के बारे में काफ़ी बोला जाता है, बिग फाइव ट्रेड्स के बारे में काफ़ी बातचीत होती है साइकोलॉजी में. सो व्हाट इज बिग फाइव? बिग फाइव अगेन. सो जैसे ब्रेन क्या है माइंड क्या है इसको लेके बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट है कि क्या है एक्सप्लेन करने के लिए. वैसे मैम ही कुछ एग्जांपल्स ऑफ पर्सनालिटी क्या सच है. स्कूल ऑफ थॉट्स. जैसे अभी हमने डिस्कस किया जैसे साइकोएनालिसिस एक है फिर बिहेवियरिज्म एक है. साइको वो एनालिसिस वाज स्टार्टेड Freudian बाय फ्रॉइड. या Freudian concept या like yeah like the concept that आइसबर्ग की तरह होता है माइंड. आधे से ज्यादा चीजें 9/10 छुपा ही होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम कौन. इट्स ऑल very secretive and very, it sounds very scandalous. It is not. If people really read Freud, then they can and he's a misunderstood guy. Anyway, so those are schools of psychology. But similarly, just your question goes about sorry, what was the बिग question? फाइव. बिग फाइव. Oh my God. Big five, I'm so sorry. Personality, yeah. So like personality, या फिर हम क्या है? Like why, who are we and why are the way we are and do we have common characteristics? Are we different? इन हम जो हैं हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, इस चीज को भी ऐसे मल्टीफेसेटेड आंसर्स मिलेंगे. ये किसी ने पर्सनालिटी को डिफाइन किया है कैसे ग्रो करता है उसके टर्म्स पे. फ्रॉइड ने बोला है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, क्या है वो स्टेज इन स्टेज ऐसे. उसी तरह से हर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ने ये बताने की कोशिश की कि हमारी पर्सनालिटी एक्चुअली क्या है, हम क्या है, सेल्फ क्या है, सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे होता है. सो बिग फाइव इज अ very modern and very easily understandable concept. Now, Freudian concept is not easily understandable. It's very complex, very socially challenging, very psychologically Yeah, but challenging. You have I to would break a definitely lot of want to come to that, the shells, a Freudian lot of Freudian theory. comfort. I would definitely want to come to that later. I mean, regarding the Freudian theory, but continue karo. Big five. Yeah. Yeah. The this new theory, this Big Five by McCree and Costa, theory by McCree and Costa. So the acronym is OCEAN, OCEAN, Ocean. Yeah. It summarizes our personality as an amalgamation of these big five personality factors. So it's like a very factor analytical approach that can we like say or summarize
पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ दिस। जैसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि ये इंसान कैसा है, अच्छा वो बंदा कैसा लगा तुझे, सो यू विल बी लाइक अच्छा ऐसा है वैसा है, हाँ ठीक ही है, अच्छा ही लगा, ये है वो है। सो विल स्टार्ट कैरेक्टराइजिंग। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही बन के तो किसी की पर्सनालिटी बनती है। फिर हम ये बहुत लेमैन टर्म्स में यूजुअली बोल देते हैं उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। फिर अगर सवाल पूछो क्यों, तो फिर वो इंसान कुछ जवाब देगा। So for example, the way the person walks, or the way he was talking, or the way she was dressed, even the physical features are a part of our persona. Persona means mask, जो हम mask पहन के रहते हैं. We are very different in front of people, and we are very different otherwise, right? Like we always are putting up a face. Let's accept it. We all Yeah. are. Yeah. But yeah, I mean that is natural. That is what we are taught to do. Yeah. तो पर्सनालिटी ऐसे ही फॉर्म होती है, लेकिन वो पर्सनालिटी किन किन चीजों से डिफाइन कर सकते हैं, ये अलग अलग थियोरीज बताती है। सो मैक्लियन कॉस्टा की थ्योरी बिग फाइव इतनी पॉपुलर है क्योंकि सब समझते हैं इसको, सब अग्री करते हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स इट्स बिजनेस बिकॉज इट वर्क्स, इट्स अ मॉडल विच पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड। इसका क्लिनिकल यूज मुझे उतना नहीं दिखता है, क्लिनिकली एकदम इसको करने से क्या ही हो जाए। इट्स अ टेस्ट और इट्स अ स्केल, सिंस एवरीवन हैज अ पर्सनालिटी इट कैन बी यूज्ड इन इट। Yeah. इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक स्केल, Yeah. it's not a diagnostic tool. It doesn't it is not applied to have to gauge some deficit या ऐसा कुछ। it is a very normal thing, like ब्लड शुगर कोई भी मेजर कर सकता है, जरूरी नहीं कि डायबिटिक को ही मेजर करना पड़े, लेकिन वो बता सकता है कि डायबिटीज हुआ है कि नहीं। बट दीज टेस्ट्स विल नॉट बी एबल टू टेल इफ यू हैव अ पर्सनालिटी डेफिसिट या कुछ डिसऑर्डर है या कुछ डिजीज है। नो, इट्स जस्ट अ जनरल थिंग, एवरीवन हैज अ पर्सनालिटी। Yeah. सो इसलिए ये, लेकिन साइकोडायनामिक थ्योरी और ये सब तो डिजीज डिसऑर्डर के बारे में बात करती थी, Yeah. डायनामिक्स की, ये हुआ है वो हुआ है, इडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑल द डिस्कम्फर्टिंग थिंग्स। बट दीज थ्योरीज वर सो नाइस एंड सो एक्सेप्टिंग, socially so comforting, not discomforting at all, and very modern and very, इसके heavy applications है इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, Yeah. पर्सनालिटी टेस्टिंग में, कि जब एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट इन द वर्क फोर्स, Yeah. टू बी वेरी ऑनेस्ट, द वे द वर्ल्ड रन्स, Yeah. उन्हें एम्प्लॉय चाहिए, है ना, Yeah. another brick in the wall. So for those kind of mass testing and all, these are very good tests, Yeah. very good tests. But they do make sense. It's not that I'm demeaning this theory by any way. No, in any way. No, not at all. The acronym is OCEAN, and it stands for O for openness, C for conscientiousness, E for extroversion, A for agreeableness, and N for neuroticism. Yeah. So I'll just go through them briefly. Yeah. So like Yeah. Sure. openness is about how open the person is to experiences. So some people are like very happy and in their own comfort zones, and some people are always on the na try karna hai. Let's see. Okay, let's try this. And some people are very rigid that no, this things have to be this way only. Yeah. So that's about openness. So like how open you are to new ideas, because people who are open to new ideas, open to new behaviors, they have the capability to change. They can see things in a different way. So that talks a lot about the personal, again, person's characteristic personality. So ये सब चीज गेज करके ना आप एम्प्लॉय अच्छा रिक्रूट कर सकते Yeah. Yeah. हैं, right? So openness is there. Then C is for conscientiousness, that how the sense of right and wrong, morality, punctuality, rules, all these things. The conscientiousness, like विवेक कि क्या सही है क्या गलत है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। High conscientiousness people, they're usually very meticulous, maybe anxious as well, but they're right on time, punctual. Yeah. There's a sense of right and wrong. Yeah. They will conform to authority, things like that. Yeah. So then comes E, extroversion. Everybody knows Yeah. extroversion का Yeah. Yeah. opposite pole है introversion. Yeah. Like outgoing nature and things like that. Teamwork, कभी कभी teamwork में भी बहुत आता है ये. Then comes A, that is agreeableness. Again, agreeableness is a very good quality for women, I think. Agreeable women are very nice women. That's a joke, I guess. I hope you get that. Yeah. So agreeableness is that, again you would like, either you would like, if it's a startup or a company, I want people to give me new ideas,
I would probably not want An everyone agreeable person, agreeable yeah, on the yeah, panel. obviously, yeah, Yeah, I would like to have somebody who can stand up and who can speak up. But yeah, if somebody is very agreeable, it's suggestibleness, agreeableness, how much you want to conform to things, that's agreeableness. And yeah, again, it's not a bad thing. yeah, It's not a bad thing at yeah, all. It's just personality characteristic. yeah, एंड ये सब स्पेक्ट्रम में है तो कम ज्यादा और ये डायनामिक है ऐसा नहीं है कि एकदम कांस्टेंट रहता है मोर yeah, और लेस कांस्टेंट रहता है yeah, बट सब्जेक्ट टू चेंज yeah, personality is relatively stable but ultimately it's dynamic in nature it yeah, is also subject to change yeah, and the last one is n neuroticism which is talking about the the tendency to react, the nerve impulse, the tendency कि मैं कैसे react करता हूँ, कैसे nervously करता हूँ, calmly करता हूँ, चिंता करने लगता हूँ, that's neuroticism basically. और मतलब उसका opposite pole है like calmness. So these are like one of the ways of looking at a personality, one of the many classifications we have. We yeah, have 16 personality factor, wo MBTI, that's yeah, also yeah, very popular. So yeah, we have many ways to look at personality. This was the big five. yeah. मैम फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो ही टॉक्ड अबाउट फ्यू थिंग्स. फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट पूरा एक पॉडकास्ट लग जाएगा केशव सीरियसली मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा बड़ा है और उसमें या मतलब अगर अच्छे से ना बताओ तो लिंक नहीं कर पाएंगे लोग या जो भी अगर कोई भी सुनेगा खुद या तुम भी या इट डेफिनेटली. सो लाइक इट्स विल टॉक अबाउट इट प्रॉब्ली लेटर इन सम अदर समटाइम एपिसोड. या श्योर समझ श्योर रहे श्योर. फ्रॉइड के बारे में जरूर बात करेंगे या लेकिन फ्रॉइड का मैं अभी आज के एपिसोड के लिए इतना ही कह सकती हूँ कि फ्रॉइड का सेंट्रल जो आइडिया था या इट वाज मोस्टली एम्बेडेड इन childhood या experiences. Like they are the biggest determiners of the personality. And then like एक rigidity थी उनमें कि 5 साल तक ये इस टाइप की ग्रोथ होगी उसके बाद ये ग्रोथ होगा लाइक बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक थियरी या समथिंग कॉल्ड डिटर्मिनिज्म या तो वो फ्रॉइडियन थ्योरी बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक थी कि ऐसे ही होता है लाइक उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल या ऐसा कुछ नहीं था दैट वी या वर टॉकिंग अबाउट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी या तो लेटर ऑन ये एक विंग इमर्ज किया कि या सिर्फ डिजीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट फ्री विल लेट्स टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ कि इंसान ही ऐसा स्पीशीज क्यों है कि आगे बढ़ गया बाकी स्पीशीज हम इतने अलग क्यों हैं हम इतना सोचते क्यों हैं हम इतना स्पिरिचुअल क्यों है हम इतना ट्रांसेंडेंटल क्यों है लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स सो सो इस तरह से धीरे धीरे लाइक स्कूल्स शिफ्ट होते गए बट साइको एनालिसिस स्टिल लाइक उसका मेन आइडिया ही वही है कि बहुत डिटर्मिनिस्टिक है उसको ज्यादा ओपननेस अगेन ओपननेस या इट्स नॉट वेरी ओपन टू न्यू आइडियाज या it's मैम. quite rigid in its own. Don't you see a kind of co-relationship between openness and extroversion? Yes, there is correlation. Okay, Definitely, there's a correlation. But openness to ideas and openness to people are two different things. okay, A person might be an introvert and a lonely traveler, but very open, open to yeah, yeah, traveling and yeah, going, makes sense. yeah, Yeah, going to new places, traveling and eating new food. And yeah, somebody might be an absolute extrovert, सबसे बात करने लेकिन hardcore, एकदम rigid with political ideas or yeah, food yeah, yeah, ideas or yeah, yeah. veganism. So that's the I difference got there. the The sense. Yeah, extroversion is your relationship with people yeah, and yourself, and openness is your relationship about, with your environment in general. yeah, yeah. Hmm. I got it, I got it. Yeah, सही है. मैम और कॉलेज के बारे में बात करते हैं. आप कैसा लग रहा है कॉलेज? हाँ बस खत्म होने वाला है तो मुझे अभी यही लग रहा है कि आई एम जस्ट लीविंग एंड आई एम लाइक प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द ट्रांजिशन बिकॉज Okay, ट्रांजिशन इज टफ फॉर एनीबडी किसी के लिए भी yeah, ट्रांजिशन बहुत टफ होता है और थोड़ा प्रिपरेशन ठीक लगता है एंड सो मेनी थिंग्स हैपेंड ड्यूरिंग कोविड सो yeah, मेनी थिंग्स हैपेंड दैट अभी लाइक लुकिंग बैक इट सीम्स दैट things have changed so much and आगे भी बहुत कुछ change होने वाला है so I'm just bracing myself for all those and just sometimes I just sit back and soak in the moment to absorb कि चलो ठीक है life goes on it happens yeah, things happen it's okay so that's what is happening so I'm just sometimes reminiscing sometimes looking back preparing और अभी to be very honest time नहीं है सबका मतलब just अभी अभी उस पे फोकस करना है to work and get out of this place that is the yeah, major concern yeah, yeah. नाइस नाइस. और मैम कॉलेज में एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ है एज इन कल्चरली कुछ चेंज? नहीं इस बार जब स्प्रिंग फेस्ट में एक चीज लगी कि स्प्रिंग फेस्ट में इस बार जब इसमें स्प्रिंग फेस्ट में फिर से लाइक आफ्टर कोविड तो इतने लोग पहली बार दिख रहे हैं हाँ हाँ. ऑब्वियसली एक चीज एक तो लगता ही है कि यू डोंट रिकॉग्नाइज पीपल एनी मोर या बिकॉज देयर हैज बीन अ गैप इन बिटवीन या या तो वो या कंटिन्यूटी रही नहीं तो या यू डोंट रिकॉग्नाइज पीपल एनी मोर
I'm तो feeling like super ultra senior here because super old ultra senior like सब बच्चे बच्चे लगते हैं अब like the 1890s Yeah. looks very kiddo like Yeah. nowadays कुछ कुछ लगते कुछ कुछ बहुत बड़े लगते थे Yeah. so अभी मैंने बहुत भीड़ देखी so मुझे अच्छा लगा कि काफी भीड़ थी like life getting back on track like the resilience of the institute on its whole it's coming back to life so I Yeah. saw that is one change because COVID में ये पूरा गायब हो गया था एंड बट यस चेंज बोले तो सबसे बड़ा वही चेंज है कि लोग तो है पर वो कम्युनिकेशन नहीं है Yeah. वो कम्युनिकेशन नहीं है वो एक हॉल कल्चर नहीं है अभी लोगों Yeah. में बिकॉज अब के जो सीनियर्स हैं वो उनके बेचारे उनको कुछ आता है उनको रिगरस ट्रेनिंग मिली ही Yeah. नहीं Yeah. उन्होंने Yeah. ऑनलाइन जिंदगी को Yeah. मैनेज किया है सो दैट ईज ऑफ कम्युनिकेशन की किसी ने एक बार एक कॉल किया और सारे आ गए वो हॉल Yeah, we कल्चर were होना probably the last batch which had good interaction with the seniors, and post that, तो I don't think. Yeah. ये उनकी Yeah. गलती भी नहीं है ना सीनियर बैचेस की गलती भी नहीं है जो अभी फोर्थ ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर उनकी गलती भी तो नहीं है वो फर्स्ट ईयर Yeah. में थे जब इसे हो रहा था Yeah. Yeah. सो ऑब्वियसली ये लेकिन इस गैप को फुलफिल करने के लिए किसी ने सोचा नहीं एवरीबडी रैन आफ्टर की एकेडमिक्स कैसे कंटिन्यू रखे Yeah. कैसे फीस लेना कंटिन्यू रखे कैसे पैसे भराना कंटिन्यू रखे Yeah. लेकिन ये छोटे 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 ये इम्पैक्ट्स भी तो होते हैं Yeah. and these impacts are very long lasting because they just didn't learn something very vital Yeah. और Yeah. उसमें गैप है और उसमें उनको बहुत बीटी हो रही है लाइक Yeah. द फिफ्थ इयर्स एंड ऑल और द पीजी जो भी या फिर लोग जो जैसे तुम लोग जैसे तुम्हें भी फोन आते होंगे कभी किसी चीज को लेके कंसल्ट के लिए कि ये क्या करे बिकॉज पीपल डोंट नो नाउअडेज कि क्या करना है कैसे हैंडल करना है पहले पहले जैसे अब वो बात नहीं रही है अब वो कम्युनिकेशन आई थिंक पीपल आर वे मोर कंफर्टेबल ओवर गूगल मीट्स एंड comfortable talking over phone or texting or reading through Yeah. Yeah. PDFs. I mean, that is उसको आई That थिंक human रिवाइव touch is वो missing. काफी पीछे चला गया Yeah. आई थिंक वो काफी इट्स नॉट दैट इट वोंट कम बैक विद एफर्ट बट ये इंटरस्पर्स्ड रहेगा दिस डिजिटल लाइफ जैसे Yeah. आज हम बात Yeah. कर रहे Yeah. हैं Yeah. एक पॉडकास्ट कितना पीक पे चला गया वीडियो कॉलिंग कितना पीक पे चला गया ड्यूरिंग कोविड तो दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स नाउ Yeah. Yeah. ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता था पॉडकास्ट तो बहुत दिन से एग्जिस्ट करता है बहुत सालों से बट पॉपुलैरिटी पीक हो गई ना अभी Yeah. सो दिस इज अ वे ऑफ लाइफ दैट पीपल हैव एक्सेप्टेड आई थिंक दिस इज अ न्यू एडिशन लाइक तो ये कैंपस में भी दिखता है जस्ट लाइक आउटर वर्ल्ड में दिख रहा है वैसे कैंपस में भी वो चीज बहुत एविडेंट दिख रही है बहुत वहाँ एविडेंट पे और भी रीज़न है, ऐसे बहुत आइसोलेटेड एरिया में भी है कैंपस, तो आप बहुत सेम ज्यादा लोगों को कितने बार देखोगे, लाइक. हाँ. बट लाइफ इज इट्स ओन वे ऑफ क्रॉपिंग अप तो मतलब दिखता है लोग मिलते Yeah. हैं बाहर मतलब ग्रुप्स आर देयर फिर से Yeah. फ्लरिश हो रहा है खाने की जगह है चाय की टपरियां Yeah. सो Yeah. लाइफ फाइंड्स इट्स ओन वे Yeah. स्पेशली जब यंग कम्युनिटीज हो तो दिख जाता है अभी जैसे काफी सारी नई इटरीज बन गई हैं फिर गेट बन गया है वो आलीशान सा Yeah. बड़ा Yeah. सा Yeah. I गेट saw बन that. गया है Yeah. तो so like people are welcoming the new changes as well so that way I think मैंने तो काफी सारी चेंजेस देख लिया बहुत हो गया मुझे निकलना है अभी, मुझे तो लाइफ में चेंज देखना है Yeah. so that's what I'm looking forward to Yeah. and Definitely. it was nice it Sure. was great like Yeah. मजा आया मुझे बात करके आज Yeah. it Yeah. was just Same here, like man. another Same here. like हम मैं मेरा तुम्हारा तो conversations ऐसे ही usually होता है like a lot of Yeah. questions lot of answers lot of discussions Yeah. Yeah. and I And it like helps, ma'am. It always helps. Like, अच्छा लगता है, जब इंटरेक्शन होता है तो हमेशा अच्छा लगता है. Yeah. So I'm really thankful for that. course. Yeah. Oh, no problem. It's always a Yeah. pleasure. Always a pleasure. You are a Yeah. kind, gentle person, and Yeah. it's always a pleasure to talk to you. Yeah. And we'll definitely like. I mean, it felt good. I was very a little skeptical, not very skeptical, maybe skeptical, but I'm comfortable, and we can do this more often. Yeah. We'll do it. We'll have like lots of discussions, and Yeah. we'll have. Sure, ma'am. Sure, ma'am. I'll obviously Okay. fine tuning will happen as in when I Yeah, proceed I with know more that, of podcasts. So course. this was my हाँ first हाँ. one. So like थोड़ा mistakes तो होते हैं, but आगे जाके And we'll obviously I'll keep her fine off. tune I'll and obviously the definitely. हाँ हाँ. mood और अच्छा हाँ, होगा. Yeah. we'll definitely have more fun. We'll have Yeah. definitely more Yeah. fun. This was Yeah. more like a very technical and question Yeah. answer, Yeah. but Yeah. I'm pretty sure that we'll get loose and धीरे धीरे और भी मजे Yeah. करेंगे बहुत मजे करेंगे केशव. Yeah. Yes, Yeah. we'll love Sure. it. Sure, ma'am. Okay, Sure, ma'am. Okay. ठीक. Thank you, ma'am. Okay, Bye. bye. And all the best. Bye. Bye. Good Bye. night. Good night, ma'am.